Hello friends, welcome once again. In the courses.ganeshbabu.in, I've uploaded a lecture series on group planning exercise. Suggest you to watch that, and in case you have any problem or you wish to register for the online/offline batches, you can call us on 9090099035 or 82755777650. The second number is also on the WhatsApp. So I was talking about group planning exercise. Now, the group planning exercise in the SSB, it is conducted in a particular sequence. First, you will be given the briefing for the GP, which is already made available in the courses.ganeshbabu.in. Now, this briefing will set the expectation from this task. So, suggest you watch that. Once you are done with that, the GTO makes you sit around the model as seen in the picture, and he introduces you the model. Thereafter, the GTO reads a narrative or a story sheet which is based on the problem, and you realize there are a couple of issues to be handled within the GP narrative. Then you get 5 minutes to read your individual copy of the narrative sheet. The aim is that you understand the problem clearly. After 5 minutes, the reading is not permitted. Thereafter, you are given a sheet of paper on which you have to give an individual solution to that particular GP, and this is the kind of sheet that you get. Your name, batch number, chest number, date, and side you can see on the right hand side there's a dabba and selection center, whichever is that, and then below signature of the candidate and the GTO. This is a sheet, actual sheet on which you have to write. In case you want, you can use the reverse side also. After finish with that, you are given about 20 minutes to discuss on that group planning, and the aim of the discussion is to come to a common agreed group solution to the GP. So converging discussion, unlike in the group discussion which was open-ended, you were not required to come to any conclusion. And finally, one of you nominated by the group has to give the group solution. All these stages are explained in the first part of the conduct, that is briefing by the GTO. So if you listen to the briefing, you will get the exact expectation. Now, in the previous video on the GTO, I told you in the group task, which is testing the dynamic pattern of your personality, here an individual is tested in context of a group. Unlike in the psychological test where you're being tested as an individual in isolation, that was testing the static pattern of personality, and this is testing your dynamic pattern of personality. So it is an individual who is being tested. So last time, if you remember, I showed you this picture. So you are in the middle and there are 9 other candidates, and thus it is an individual testing but in context of a group. So your functional capacity, your ability to function in a group, and thus expected level of performance and present level of performance. How much is the gap? Can this be filled by the training academy, trainability factor? All those things I've already explained, so I'll not speak here. Now, because you're performing in a group, so the group dynamics comes into play. So that also we spoke, and then you understand that this is forming part of a leaderless group task where nobody is a nominated leader. You have to function within the group, and then based on your function, you emerge as a natural leader. All those things we saw. Couple of pointers. The second task in the GTO group series, the first being the group discussion. There are 2 of them, GD1 and GD2. We'll not get into that. Leaderless group task, already spoke. This is an indoor task, and what does it mean is this involves a problem solving, but then this problem solving is more theoretical in nature. You don't have to physically execute it. So it is like a planning and organizing an operation across the IB, but you don't have to actually execute it. So this is a theoretical problem solving skill. So you must know how to problem solving a sequence, and then to not execute it, to plan it on paper. Next is in the entire GTO, this is the only document, GTO ka jo individual solution is the only written document that you submit to the GTO. Otherwise, all other tasks in the GTO series, there is no submission, there is no written work except for the GP written. Whereas in case of psychological test, 100% it was all written. And in fact,
this dossier is attached with your report even if you get recommended, and it remains with you for next, even after you leave your service, these documents will be there. So psychological test 100% in writing. In the GTO, the group solution for the GP is the only written document that you submit, which is attached with your final report. Now, thereafter, in the discussion, you understand you cannot take active participation in the discussion unless you understood it first, and secondly, you have adequate power of expression that is verbal in nature. So, power of expression verbal becomes extremely important here, both in the GD as well as this, and of course in the lecturate also. So that's the second task with power of expression required. It is a converging discussion. By the end of the discussion, you should be able to come to a common agreed group solution. You cannot end up giving your own solution. So it's a converging discussion, whereas in the previous group discussion, it was not a converging discussion, it was open-ended. You were not required to come to any conclusion. Your theoretical planning and organization skills are checked here. You don't need to execute it on the ground. So there is a lot of fantasy कुछ भी लिख जाते हैं, whereas in the next task, that is progressive group task, that is a practical task where you have to actually execute. So this is a theoretical task, PGT is a practical task, and then final group solution has to be presented by one of you nominated by the group. There is a misconception that whoever gives a group solution becomes a leader. That's a wrong misnomer, it's a wrong myth. If you have any doubt, you can put it below the video and I'll take on that separately. Now, I told you that your performance as an individual is seen in context of a group. So there are two terms, contribution versus participation. Contribution is yogdan, participation is bhag lena. There is a video by this name, contribution versus participation, the AFOSOP YouTube channel. Request you to watch that. What you're expected is to contribute, yogdan, but what you end up doing is participation. That's because you have not understood at what level you have to contribute. There are 3 levels. I'll talk about that. The GTO is looking at 3 things based on your performance in the group, in all the leaderless group tasks: your role play, your consistency, and your group effect. Now, what is role play? If the entire group is a train, the train moves because of engine, not because of dabba. So, are you engine or a dabba? So, you need to be engine. Consistency, with what consistency you're performing in each of these tasks. So there are 9 tasks. Consistently you should be able to play engine to perform extremely well. And an inconsistent engine or inconsistent performance will not be very favorable. And what is group effective? I'll have it in the next slide. So we'll talk about in detail about the group effectiveness. So group effectiveness, for the purpose of definition, it is the total integrated, look at the word, integrated sum of a candidate's contribution. Integrated matlab over the 9 tasks starting from GD, GP, PGT, GOR, उसके बाद क्या होता है, half group task, lecturate, individual obstacle, command task and final group task. In सब के अंदर whatever you perform इसका integrated assessment है. So it is sum total of integrated sum of candidates contribution, not participation, towards 2 things. Towards the group members. Towards the group members is the interpersonal contribution, emotional contribution, एक दूसरे के टीम भावना का contribution. Second is toward the task. This is टास्क को कैसे कंप्लीट करते हो. दिस सेकंड वन इज ए इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन. सो इफेक्टिवली 2 लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो और इंटेलिजेंस के लेवल पे क्या कर रहे हो, बुद्धि के स्तर पर, मतलब टास्क को आगे बढ़ाने के लिए. जीडी में कंटेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एडेप्टेबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन, ऑल दोस थिंग 2 लेवल पे. अब इसको और समझने के लिए दिस पॉइंट नंबर ए एंड बी, इसको अगर क्लासिफाई करें तो इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं: इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इमोशनल कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. क्या है दिखाता हूं. पहला है बुद्धि के स्तर पर, फैक्टर 1 की क्वालिटी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. फैक्टर 1 के 4 क्वालिटीज क्या क्या है: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. इसको छोड़ दो, OLQ के बारे में बात नहीं करते. अगर आपकी बुद्धि शार्प है, यू कैन कंट्रीब्यूट एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल. फॉर एग्जांपल अगर जीडी में, तो जीडी में अगर आपको कंटेंट ही नहीं पता तो आप इंटेलेक्चुअली क्या कंट्रीब्यूट करोगे? ऐसे आई एग्री विथ यू, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, लेट्स गिव हिम अ चांस बोलते रह जाओगे. सो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन नोट कर लो. इट इज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फंक्शनल और प्रैक्टिकल aspects of the task. It involves planning, organizing and the available resources, both inner resource, आपकी खोपड़ी
आपका दिमाग, एंड आउटर रिसोर्स, हेल्पिंग मेटल, फट्टा बल्ली, जीटीओ ग्रुप, जीपी के रिसोर्सेज वड़ावा। तो ये बुद्धि के स्तर पर टास्क को आगे ले जाने के लिए जो बुद्धि के स्तर पर कंट्रीब्यूशन है, इसको करने के लिए इसमें आपको अपने बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा, तर्क शक्ति को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को। सो फैक्टर 1 की क्वालिटी को दिखाता है इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अगर ये चाकू तेज है तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, अगर आपका जंग लगा चाकू है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मेजर एरिया, बोथ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू में आपका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे रोट मेमोरी हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, अगर आपका कमेंट आता तो इसको आगे भी लेके जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन ग्रुप इफेक्टिवनेस में। टोटल इंटीग्रेटेड सम ऑफ कैंडिडेट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स एंड टुवर्ड्स द टास्क। तो ये जो है टुवर्ड्स द टास्क कंट्रीब्यूट करता है ना। फर्स्ट पॉइंट टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स, दैट्स एन इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कंट्रीब्यूशन, भावनात्मक कंट्रीब्यूशन। टीम को टीम की भाव में फिश मार्केट बनाते हो, हल्ला करते हो, दूसरों को फट्टा नहीं देते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल या इंटरपर्सनल स्किल्स में प्रॉब्लम है। व्हाट इज इमोशनल कंट्रीब्यूशन? It is candidates relational or interpersonal dimension, that is to relate at an emotional level to each other and to the task. ये टास्क हमारा है, ये ग्रुप हमारा है, ये बंदा हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है, इसको भी साथ लेना है, वो भी उसको भी करना है, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, हम सब ने मिल के करना है। पहला वाला था इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भावनात्मक है ना। सो ये जो इमोशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस बाइंड्स द ग्रुप इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन टास्क, मतलब ये टीम को टीम भावना जोड़ने में मदद करता है। पहले वाला जो है वो जोड़ने से ज़्यादा क्या है, वो प्रॉब्लम को हैंडल करने में, प्रॉब्लम को आगे करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। वो बुद्धि के स्तर पर, ये भावनात्मक स्तर पर। समझ में आ रहा है तो बताना क्या समझ में आता। तो आप सोचो, अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अगर ख़राब हो, आप राक्षस की तरह सब कुछ खुद ही करने के चक्कर में आपको फिश मार्केट करोगे, सेकंड वाले हार्ट की तरह होगा, तो नेचुरली योर एबिलिटी टू फंक्शन इन अ ग्रुप विल बी वेरी वेरी बैड। फॉर एग्जांपल, चक दे इंडिया में दैट लड़की बिंदिया नायक, शी हैड द सेकंड काइंड ऑफ ए थिंग, वो ग्रुप को तोड़ती थी। लगान मूवी में लाखा को पता है ना, मंदिर में जाके पीटने वाले थे क्योंकि उसका सेकंड टाइप का था। तो आप भी कहीं अपने चक्कर में, सेल्फिश इंटरेस्ट में फर्स्ट की जगह सेकंड जैसे हो गया, तो आपका इमोशनल कंट्रीब्यूशन विल गेट अफेक्टेड, है ना। विल सी मोर अबाउट इट इन दी वो। द लास्ट है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरों की सुनोगे नहीं, इस सब के बावजूद ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए। फिश मार्केट बनाते हो, जब चिल्लाते हो, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपसे, इसका मतलब क्या है, your ability to maintain the structural stability is very low, you can actually damage the group. For example, again बिंदिया नायक, चक दे इंडिया की लाखा ने पूरी टीम को ही तोड़ दिया था। एक बार कबीर खान ने बिंदिया के चक्कर में टीम ही छोड़ दिया, मैकडोनल्ड वाला जो इंसिडेंट हुआ था मारपाट का। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ हो गया। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मतलब टीम का जो बुनियाद ही हिला दिया उसने। सो अगर आप भी ऐसा करते हो तो नुकसान हो जाएगा। पीपीएनडीटी में मास वॉश आउट होता है, जीटीओ बोलता है ओके हाफ ग्रुप में बांटता है, उसके बाद हाफ को भी हाफ में बांट देता, फिर भी लोग चिल्लाते, पूरा को पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। वाई? बिकॉज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप का ध्यान नहीं दे पा रहे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि योर सच बिहेवियर इज कॉजिंग डैमेज टू द ग्रुप एंड इट्स इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग। इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग करके बोलते एक वर्ड। So candidates' ability to face or handle the resistance and frustration in such a manner that does not seriously damage or impair the effective functioning of the group. देखो क्या वर्ड है, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप को अगर आप डैमेज करते हो तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं है जो हम देख रहे हैं, है ना। इट इज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फेस और हैंडल रेजिस्टेंस और फ्रस्ट्रेशन oblique conflicts in such a manner that does not seriously damage or impair the effective functioning of the group and also maintains the unity or cohesiveness in the group. ग्रुप के अंदर टीम मेंबर्स के बीच में जुड़ाव की भावना बनी रखे, भले ही उसके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपस में रेजिस्टेंस आ जाए, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, फट्टा नहीं दे रहे, जो भी हो, लेकिन अगर ग्रुप टूटता आपके कारण गड़बड़ हो जाएगा। सो ये तीन चीज़ देख रहे हैं तो आप देखो, अगर पहले वाले जैसे आपके वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वाला, तो आप ठीक हो, वरना आप अगर बदमाश हो तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगेन चक दे इंडिया एंड लगान की मूवी से आप उसको देख सकते हो। नाउ इसी में एक और है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में, लास्ट में ग्रुप सॉल्यूशन मैं ही दूंगा। आपके अंदर का असुर जाग जाता है, किसी ने बोल दिया कि ग्रुप सॉल्यूशन देने वाला लीडर। अरे कैसे ग्रुप सॉल्यूशन वाला देने वाला लीडर होगा जब ग्रुप का सॉल्यूशन ही नहीं आया। तो ये जो एक सोच
आज डाला हुआ आप लोग के अंदर कि जो भी ग्रुप सॉल्यूशन देगा वो हीरो, नो, इसमें कभी कभी आपको उल्टा पड़ जाता है। इसके बारे में वीडियो में ज़्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। सो ग्रुप सॉल्यूशन देने वाला लीडर नहीं, ग्रुप सॉल्यूशन तक पहुंचाने वाला लीडर। बाकी ट्रॉफी कोई लेके आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है ना, वो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे उसमें अंदर। सो ग्रुप सॉल्यूशन देने के लिए अगर आप झगड़ा करते हो, छीना झपटी करते हो, नुकसान हो जाएगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे बात करेंगे इसके बारे में। सो ग्रुप सॉल्यूशन के बारे में जो ब्रीफिंग में एक स्टेटमेंट है, जब ब्रीफिंग देखोगे तो पता चलेगा। जब वीडियोस को देखो तो फर्स्ट में ब्रीफिंग है, उसमें जो ग्रुप सॉल्यूशन के लिए जो पार्ट है वो बोलता है एट द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, एट द एंड एनी वन ऑफ यू, कोई भी, डज नॉट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन, में नरेट द ग्रुप सॉल्यूशन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है, बट ग्रुप ने ऐसे बंदे को नॉमिनेट करना जिसने, जो पहले बात तो ग्रुप सॉल्यूशन दे पाए, दूसरा बात ग्रुप सॉल्यूशन तक आने में उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो, और जो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए, ना कि जो ऐसी साला खड़ा हो गया उसको लगता है कि ग्रुप सॉल्यूशन देने वाला लीडर बन जाना। ग्रुप सॉल्यूशन देने वाला लीडर नहीं बनेगा, ग्रुप सॉल्यूशन देने योग्य होना चाहिए। इट इज़ लाइक स्कूल का अगर कैप्टन सेलेक्ट करना तो किसी को भी आरे गहरे नथु गहरे को नहीं खड़ा कर सकते। इट हैज़ टू बी समबडी विथ सर्टेन डिग्री ऑफ कैपेबिलिटी। टीचर्स के बीच में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल के बीच में होना चाहिए, ना कि किसी को ऐसे लगता है कि मैं खड़ा हो गया। अरे तुम खड़ा होने लायक भी तो होना चाहिए, तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, को करिकुलर परफॉर्मेंस होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए। ऐसे ही खड़ा होने से थोड़ा ना होगा। सो समझना उसके बारे में। नाउ जीपी सॉल्यूशन इस शीट पे लिखते, मैंने बोला कुछ लड़के लड़कियों को एक मिथ है कि ये चेक नहीं होता। नो, ये होता है, बुरी तरह से चेक होता है, और ना सिर्फ चेक होता है, इसके ऊपर एक मार्किंग भी होता है। बट ये चेक कब होता है? ये चेक होता है GTO 1 ख़त्म होने के बाद, जब आप लोग छोड़ दिया जाते हो, आप लाइन में चले जाते हो, कुछ लोग इंटरव्यू के चले जाते हैं, GTO गोज़ बैक टू द ऑफिस, एंड ऑफिस में द GTO गोज़ थ्रू दी क्या बोलते हैं, GP का रिटर्न सोल्यूशन। नॉट ओनली गोज थ्रू, ऊपर 6 डब्बे दिख रहे हैं, जिस 6 डब्बे में ही इज़ लुकिंग फॉर सर्टेन थिंग। तो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, नोट कर लेना, बिकॉज यू हैव टू डेवलप इट। कैसे डेवलप करना है? courses.ganeshbabu.in में इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। एंड दिस आर द थिंग, GAPRTS। नाउ व्हाट इज दिस GAPRTS? I'll tell you the details of it. It is marked and you are given awarded some marks on this based on आपने जिस तरह से लिखा है, GP को जिस तरह से समझा है। Let's see what are this GAPRTS. G stands for grasp. How nicely you grasp it. A, have you caught on the aim of the GP? P is priority. What is the basis of priority? कुछ लोग बिकॉज ऑफ फॉल्टी कोचिंग नेशनल प्रॉपर्टी को फर्स्ट दे देना, लाइफ को सेकंड दे देना, ऐसे करके माइंड फिक्स हो जाता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन फिक्स माइंडसेट, इट्स पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हाउ डू यू प्रायोरिटाइज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अंडर व्हाट कंडीशंस यू प्रायोरिटाइज। अनलेस यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वो फिर आप कुछ भी वो फिक्स टेम्पलेट पे चल जाता है कि नेशनल प्रॉपर्टी। नो, ये बस, ये तो हम लोगों ने बना दिया इस तरह का। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। सो वॉट्स द वीडियोस में आपको पता चलेगा। आर इज रिसोर्सेज ना, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू इंटीग्रली हैव, व्हाट यू कैन फाइंड द सराउंडिंग, है ना। कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी टर्म्स बोल देते हैं कोचिंग में, जो है, जो हम लोगों को GTO बनते टाइम एक टर्म यूज़ किया था, फॉर एग्जाम्पल हिडन रिसोर्सेज। ना, हिडन रिसोर्सेज, अनलेस यू आर ए SSB कैंडिडेट गॉन फॉर कोचिंग, आपने ऐसा टर्म कभी सुना नहीं होगा। सो डोंट यूज दिस फैंसी टर्म, बिकॉज दीज आर नॉट टर्म्स दैट कैंडिडेट के यूज़ के लिए, दे आर गिवन टू अस व्हेन वी वर बिकमिंग SSS, और हमने उसको कोचिंग में बताना शुरू कर दिया। आप उसको बोल के आपको लगता है आप बड़े होशियार बन गए। नो, आप होशियार नहीं बने, आप बेवकूफ़ हो, एकदम पकड़े जाओगे कि आप भैया कुछ भी ऐसे ही घटा पटा के आए हुए करके। नो, गलत हो जाएगा, है ना। T इज़ फॉर टाइम प्लान, टाइम एंड डिस्टेंस कैसे निकालना है, एंड S इज़ फॉर द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, लॉजिकल सोल्यूशन, लिंक्स है, देयर इज़ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन, ऐसे हवा में मार दिया, है ना। तो इसके बारे में आप देखना, यू नीड टू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज विदाउट क्लैरिटी यू कैन नॉट बी इफेक्टिव इन द ग्रुप। यू मे फील यूर परफॉर्मिंग वेल, बट यू विल एंड अप डूइंग पार्टिसिपेशन, नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी एंड वैल्यू क्लैरिटी होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था। सो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, एक जंग लगे दिमाग से तैयार करने के बजाय एक शार्प दिमाग से एक इंटरपर्सनल स्किल्स को ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने एरो उल्टा लगा दिया, मतलब ये हार्ट इधर होना चाहिए, हार्ट इधर होना चाहिए, उल्टा कर दिया है, तो आप उसको बदल देना। मतलब जो लेफ़्ट वाला हार्ट को राइट में, राइट वाले को लेफ़्ट में करना, ये गलत लगा दिया, ये भी गलत लगा दिया, है ना। तो ये जो पीछे के दो है उसको गलत लगा दिया, इन दोनों सेकेंड एंड थर्ड को पोजीशन चेंज करना। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस हैज़ बीन रॉन्गली मार्क्ड। सो
तभी जाके आपका ये हो पाएगा, वरना योर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, एट एन इमोशनल लेवल, द वैल्यू लेवल, ये नहीं कर पाओगे। ये इसमें गलत हो गया है। आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट कि इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। द हार्ट्स हैव टू एक्सचेंज एंड द वैल्यू में द थिंग सेकेंड एंड थर्ड हैज टू बी एक्सचेंज। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो जब तक आप इसमें ये परिवर्तन नहीं करोगे तब तक ये आपकी बात बनेगी नहीं, और इस परिवर्तन को जब तक नहीं करोगे इन स्टेजेस में यू कैन नॉट परफॉर्म। तो इसके लिए आप क्या करना, courses.ganeshbabu.in में जाना और उसमें ये वीडियो सीरीज़ में 10-11 वीडियो का सीरीज़ बनाया, मोर विल बी अपलोडेड हियर, सो गो एंड वॉच इट। उसके अंदर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का एक बेसिक है, उसके अंदर ब्रीफिंग है, इंडिविजुअल सोल्यूशन का शीट दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट, ब्रीफिंग दिया हुआ है डिटेल में, जीपी मॉडल का बहुत डिटेल में वो है। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट का उसमें सब कुछ दिया हुआ है, राइटिंग के लिए 10 मिनट्स दिया हुआ है, एंड देन इंडिविजुअल सोल्यूशन को कैसे लिखना है, उसका किस तरह का एक सजेस्टेड फॉर्मेट है, कैसे ये जो GAP RTS था, जो मैंने ग्रास पेम प्रायोरिटी ना सोल्यूशन टाइम प्लान सब दिखाया था, कैसे इन चीज़ों को समझना है, कैसे इसको कागज़ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इज़ एक बेहतर तरीका टू रिप्रेजेंट ऑल दिस थिंग, ताकि GTO को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके अंदर से मिल जाए। दीज डिटेल्स आर गिवन देयर, सो काइंडली गो एंड वॉच दैट एंड प्लीज़ पुट योर कमेंट्स, ताकि मैं इसको आगे बिल्ड करूँ या कोई करेक्शन कर रहा हूँ तो अभी से कर लूँ, बिकॉज इट्स अ लार्ज एफर्ट दैट आई एम टेकिंग टू बिल्ड अप दिस सीरीज़। अगर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ बिना मेरे बोले शेयर करना, प्लीज़ डू दैट मच फॉर मी, एटलीस्ट आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट। एंड वंस यू डू ऑल दिस थिंग्स, वंस इसके अंदर ये दिखाया होगा, देन यू विल नो हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम एक रस्टेड थिंकिंग या शैलो थिंकिंग से डीप थिंकिंग में, इंटरपर्सनल स्किल्स में कैसे शिफ्ट करना, वैल्यू क्लैरिटी कैसे लाना, ये पता चलेगा। एंड फीडबैक जरूर देना, बिकॉज फीडबैक विल एनकरेज मी टू मेक मोर सच वीडियोज इन डिटेल। एंड इसको अगर आप डेवलप करना चाहते हो और मेरे मदद से करना चाहते हो, तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप इज दैट if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. This will greatly affect you beyond SSB. These things are not only for limited to SSB. In any organization, कल को आप सिविल में चला जाओ, सिविल सर्विस में चला जाओ, रेलवे में चला जाओ, there has to be intellectual contribution टास्क के लिए, there has to be an emotional contribution टीम वर्क के साथ करना, there has to be value clarity so that you become a person of character. इसका ऑनलाइन बैच अवेलेबल है 2 weeks का, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। एवरी मंडे द फ्रेश बैच स्टार्ट्स एंड द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन 10th of January, सो कैन डिसाइड टू जॉइन दैट। एंड दीज आर द डेट्स, है ना, जनवरी में 10th, 17, 24, 31 को यू कैन जॉइन, ऑनलाइन है। फरवरी में 7, 14, 21, 28, मार्च में भी 7, 14, 21 एंड 28, ऑल दीज आर मंडे, एनी ऑफ दीज डेज। द फर्स्ट बैच दैट इज स्टार्टिंग इज ऑन मंडे, दैट इज 10th January 2022. You're most welcome to join, and in case you wish to join, this is the number on which you can WhatsApp me, 8275577650. इसके अलावा 9090099035, इसके ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं in case you need any assistance. इसके अलावा those of you wanting to go for the 2 weeks of SSB classes, the offline classes are available as of now. In case of corona का issues कुछ आया था, I'll make the announcement and you can plan it accordingly. So here also fresh batch starts every Monday. The next batch is on 10th of January. You can plan it 10, 17, 24, 31 as I told you for the SML, same duration, but these are offline batches. ऑनलाइन में अभी ये नहीं है। ऑनलाइन में व्हाट इज़ अवेलेबल, फुल साइट टेक्स्ट असेसमेंट इज अवेलेबल एंड पर्सनल इंटरव्यूज अवेलेबल। सो अगेन व्हाट्सअप मी 8275577650 और 9090099035 पे आप मैसेज कर सकते हो, एंड आई शेयर यू द डिटेल्स। And courses.ganeshbabu.in पे जाना। Other than the GP, there are more videos. Please go through it and give me your feedback, because your feedback will help me to build this content in a productive manner, so that people after you also can benefit from this, and hope to see in large number of both for the offline and online batches and for this courses.ganeshbabu.in पे आके। Thank you, and I hope this video is helping. Thank you, and may God bless you. Thank you.